Hello friends, I am here once again with a different sort of video. In this video, I will not explain the functional grammar topic. Rather, I will discuss and I will share my own idea experience of learning English over the years. And I better know what sort of problem Hindi medium students face or come across when they start learning English after after pass out from school. But before that, I will have to give the valid proof, concrete proof that I am really Hindi medium student. So I will let you see the group photo of my school, the progress report of my school, and that will give you the clear cut idea that he is really Hindi medium pass out, and it will make things easier for me. Or otherwise, you will think that he is in camouflage identity, creating false impression, misleading people, advising unnecessarily the invalid things. But see, take cheer. This is the group photo. And I'm sorry, I'm really disappointed, utterly disappointed that it is not in the frame, because it was framed in the long past, moisture, mutilated now. But you can see the group photo. This is of class 3. Many of the friends are in Jamshedpur. And see, report card. This is class 2 report card. See, name of school. Bharatiya Model Middle School, Jamshedpur. In 1978, it was Hindi medium school. Then, after 3, automatically I will carry in Hindi schools. There are students who study up to 5, 6, 7, 8 and then come to Hindi medium. From English medium, you can come to Hindi medium. From Hindi medium, you cannot go to English. But still, I will let you see the report card of higher section. These are the class 8, 9, 10 report card. This is Tata Steel Education, affiliated Bihar board, Hindi medium board. Tata Steel doesn't indicate that it was a Cambridge school. So it was very much Hindi medium school affiliated to government Bihar board. Now I got, you must have got convinced, and I will carry on further. So if you happen to see a person who is not speaking immaculate English and advising others, that doesn't mean he has got no right to shoot the videos. At least he deserves the right to share his own experience and ideas. And it is really very, very creative, constructive, because it gives me a chance to learn and present my thoughts. Okay, fine. So I will deal. And now onwards, if you happen to see people interacting in English, if not like a champion, then never say that he can never be a Hindi medium student. Okay. Now I will deal about I will deal the problems they come across. You know, my whole and soul explanation is only for such students who are the students. There are some students who go to school simply because the other students, other children go to school in their vicinity. Going to their school is a routine activity, even for their parents. We send our children to school because everybody goes there. But they do not study seriously, and children are not at fault. It is the family background, the sincerity, the regular checkup of homework and other study activities. Okay. So I am talking about children are not at all fault in all the cases. They overlook study in the higher section. So my all videos, my all advices, my all suggestions, my own innovative methods, way outs are solely dedicated to Hindi medium students and such English school where explanation is not done in English. Convent teachers are not in English medium school in the rural area, in the small town. So what does it indicate? Never think that you are something special because you studied in English school, teacher explained it, you learned the language with the help of English textbook, and it is a normal process. You haven't done something special.
Yes, definitely. If you become scholar, if you enrich your vocabulary, if you become a champion speaker, debater of national level, then definitely credit should be given to that person or a student. But as far as general day-to-day conversation, it's a very simple affair. If you have learnt in English school, what the special you have achieved? Nothing. Okay, coming back to the main point. So as a Hindi student, sincere student is expected to study or complete the fundamental things. If you go to Spoken English Institute, as you have been doing over the years, and if teacher asks, what is present perfect? Present perfect. If your condition is like that, you just step out and better do other activity. So as a sincere student, you are not expected that you have a strong hold on the grammar, all grammatical topics. You are well acquainted. No, one can never be. After all, he is a student. Even the teachers do not have the clear-cut idea of fundamental grammar. And two things I want to state in the very beginning, although I am in the middle of the video, that if people suggest that grammar is not at all essential, you can speak without grammar. It is their individual experience. Because if they study English as mother tongue, if the school is English medium, then they can learn even neglecting or overlooking grammar. That's the funda. Many English medium students are in my friend circle. They are well acquainted with grammar, like Chandan Kumar Chanchal is master of grammar. He has got good knowledge. So if you get the suggestion, don't study grammar, never get misleaded. You just rely on the suggestion of Hindi medium teachers. Grammar is absolutely essential for Hindi students in fundamental learning. Again repeat, fundamental learning, not in the advanced learning. Advanced learning is all about practice and the uses. For uses, you have got a book of foreign writer Michael Swan, Practical English Uses. That is not a grammar book. Okay. So about grammar, if somebody advises, grammar सीख के क्या करें? Grammar से अंग्रेजी थोड़ी सीखते हैं. तो ठीक है, आप उनकी सलाह माने और जिंदगी भर सीखते रहें. Now coming back to the point of translation. There are many people, millions of people in India. Translation is farce and baseless. Oh, it's a long saga. Our forefathers used to translate. My goodness. Translation gives the clear-cut idea of sentence formation in the basic level. You just practice it. Then they will raise the question. There is no end of questions. बोलने समय ट्रांसलेट कैसे करोगे भाई? जरूरत क्या है? I will learn translation for basic learning, sentence formation. My basic learning sentence formation. वो 2 घंटे से पढ़ रहा है. He has been reading for 2 hours. Okay, fine. उसके बाद translation को गले में नहीं टांगना है. You learn translation, the high school and middle school translation. That doesn't mean you become a champion debater. You have full authority over the knowledge. You are the master of it. You have learned language to some extent, my dear. That is primary level. After that, forget all about translation. Never dream or fix the aim that I will translate and then speak. At primary level, it is absolute necessity. तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सलाह है कि अंग्रेजी मीडियम के एक्सपर्ट से आप सलाह ना लें. उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ एरर्स जो होता है वो उनको कहें कि मुझे बताओ. वे बताएंगे आपको वुड और शुड का कहाँ प्रयोग है. पर उनकी इस सलाह को कभी मत मानो कि ग्रामर और ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भटकते रह जाओगे और भटकते हैं. मैं तो 22 साल की एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है. ये स्पोकन इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं था, इसकी टेक्निक ठीक नहीं है. मैं वीडियो देखूंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं नॉवेल कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे. इंग्लिश सीखना तो दूर, आधा भी नहीं सीख पाओगे. स्टडी ग्रामर, स्टडी ट्रांसलेशन, learn how to form the sentences, do the basic learning, and up to that time don't expect that overnight you will emerge as a champion speaker. My very way of speaking is venomous. You know why? Because I'm utterly frustrated that people give different sort of advices which they didn't practice themselves. So people should speak as per their experience. Now I'm going to explain the psychological problems. क्या करें सर, इंग्लिश तो आता है, मुझे प्रवचन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी अच्छा लिख लेता हूँ. तो भाषा के 2 रूप हैं.
There are two forms of language, the written one and spoken. If you do not know how to write, that means you learn functional grammar. And in all my videos, I have said million times functional grammar, functional uses, sentence formation, translation, and grammar. Enough is enough. You do that. You watch my videos, do the basic learning, then do the higher level of learning, but still you are not a speaker. यहीं पर हिंदी मीडियम की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती। क्या है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? मैं बोलूँगा तो लोग गलती पकड़ लेंगे, तो अंग्रेज लोग क्या सही बोलते हैं? फॉरेनर्स ने कहा, इट इज़ नॉट माई स्टेटमेंट, इवन द नेटिव स्पीकर्स डू नॉट यूज मोस्ट करेक्ट लैंग्वेज। यू आस्क योर सेल्फ, मैं हिंदी सही बोलता हूँ क्या? और ये आज पानी जम के पड़ा, तो जम के कैसे पड़ा? फ्रीज हो गया क्या? आज जोरदार बारिश हुई है, तुम समझ क्या नहीं रहा बॉस? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम मेरी भावनाओं को समझ क्यों नहीं रहे हो? तो हमारी हिंदी जो है कॉलोकियल और स्टैंडर्ड वो बिल्कुल अलग है। तो हम अंग्रेजी के स्पेशलिस्ट बनते। किसी ने 4 लाइन कहा सुड गलत, क्यों भाई? उसे बोलने दो, और ब्लंडर करे तो उसको सुधारो। लेकिन उसको क्यों हर्ष में बताते हो? क्या हिंदी बोलने से बताते हो कि तालब स का उच्चारण श ना किया, यहाँ पर अव्यय गलत है, तुम्हारा जो है भूतकाल वर्तमान के साथ संयुक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया, तुम संयुक्त वाक्य बोल गए। आपने किसी को सलाह दिया हिंदी बोलने समय? पूरी छूट है। पर जब इंग्लिश बोलते हैं तो अपेक्षा क्या है? ओह माय गॉड, व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज ही पोजेस, ही डोंट हैव इवन द आइडिया ऑफ प्राइमरी सेंटेंसेस। क्या ज़रूरत? उसको सहयोग कीजिए, उसे बोलने दीजिए। यदि वो बहुत भयानक गलती करता तो उसको सुधार दीजिए। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हम बोलेंगे तो लोग गलत पकड़ेंगे। पकड़ने दो, हंसने दो, उन्हें बोलने दो, क्या दिक्कत? मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एक एडजेक्टिव रखा है, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है। मेरे हिंदी इंग्लिश मीडियम के असंख्य दोस्त हैं, वीडियो देखेंगे, हो सकता है गलत सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी इंटेंशन किसी को अपमान करने की नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का नाम है, हिंदी मीडियम का नाम है मिस्टर ग्रामर। ये जब भी सोचेंगे कि वो ग्रामेटिकली गलत बोल रहा है, उसका ग्रामर नहीं है, ये इनका धंधा है, और ये कभी नहीं सीखते, और जो ये नहीं करते वो सीखते। इंग्लिश मीडियम का नाम मैंने रखा है क्योंकि वो हिंदी स्पीकर्स को कभी कभी नीची निगाहों से देखते हैं कि खुद बोलने सीखो यार, तब दूसरे को सिखाओ। ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिया है। तो मैं कहता हूँ भैया कि बहुत सारे अर्थों में आप भी बिल्कुल मतलब कमी है आप में। आप जब कोई ड्राफ्टिंग करते हैं तो जनरल एक्वेंटेंस से काफ़ी गलतियाँ हो सकती है उसमें, और मैंने ऐसा देखा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने इंग्लिश मीडियम को जो भी नाम दिया, मैं कहना नहीं चाहता, मैंने उनका नाम रखा है। हिंदी को मैंने मिस्टर ग्रामर कहा है, और इंग्लिश को रखा है उनके एटीट्यूड के लिए। ये वर्ड उनको सूट नहीं करता, पर मैंने रखा है इंग्लिश का एटीट्यूड की ये बहुत बड़ी बात है, बाकी लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ हैं, ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैंने उनका नाम रखा है ओवर देयर। क्यों नाम रखा? क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने हमें सलाह दिया है कि ओवर देयर का तभी प्रयोग करना है जब बीच में हिंड्रेंस हो। जैसे मैं इस रूम में हूँ, बीच में पार्टीशन है, उसके दूसरे हिस्से में मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इज सिटिंग ओवर देयर। पर हर जगह ओवर देयर, हर जगह। यहाँ दिख रहा है कि वो सामने में 10 मीटर पे है, ओवर देयर। कोई चीज़ है ओवर देयर, तो ओवर देयर का सही इस्तेमाल करो। आपको गलत लग रहा है, वीडियो रोक दें, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे। चलिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या है? साइकोलॉजिकल प्रेशर से गलती हो जाएगी, मैं बीच में रुक जाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, वो सोचेगा कि इसको तो आता नहीं है। देन माय डियर फ्रेंड, प्लीज डोंट माइंड those whosoever watched video up to this point. I beg apology with my folded hands. I am perfectly in the right state of mind, but during my whole tenure as a teacher, in the staff room, everywhere, I have seen such people who keep different opinion about the aspirants of Hindi medium.
So definitely my approach will be different. I am not here to settle the old score. I am here not to take revenge or to avenge something. I am very much friendly, but my way of speaking has some venom only because of the attitude. They advise unnecessary thing, they mislead people. Okay, now I will tell in within 2 or 3 minutes, then I will put the end to the video. It is already up to not visible. So to tackle the psychological pressure, and especially to the people who are all capable of writing immaculate writing, then my dear friend, you just practice. And while you practice, all of a sudden, don't practice with Harsha Bhogle and Siddharth Basu. Don't go in the studio of Republic channel and talk to Arnab Goswami. They will fire all their cylinder and you will be nowhere. So unless and until you yourself become champion, never go for the actual conversation with the most efficient people. Practice in your own group where the practitioners are of the same level. They will have sound theoretical knowledge, but in speaking, helpless. So practice, enhance your spoken skill. So in case you have the theoretical knowledge, your only practice will lead you to efficiency. Such students who somehow know, then you enhance your theoretical knowledge, be capable to form all type of sentences, and then practice. Practice and practice. Now see, lot of people talk about communication skill. I care a fig for that because I am a learner. As a teacher, all through my life, I have strived hard to achieve perfection, and yet it is distant dream. So I am a practitioner, I am a learner myself. I am trying my best to share my own experiences. So I am a learner. Teacher should be a learner all through his life. So I care a fig, means I do not give too much importance because I am not a corporate leader. I am a teacher. I have to interpret and explain my lesson in thoughtful manner, and that I do. So communication skill need is for professional people, those who are in corporate field, team meeting, prove your point, take initiative, and emerge as a leader. But fluent English is a different thing. So fluency can be achieved by practicing. Now, one thing, that when you achieve perfection, and even if you do not go to the spoken English trainer, you will have some sort of style. You know, you cook vegetable, add the spices at the end of it, and then there is flavor. Then all of a sudden you will not get the style. Up to the time you struggle and you do not complete your sentences, your helplessness will get reflected by your face, by your way of conversation. Never mind. But once you are able to converse without any pause, any difficulty, then just practice. High level practice is group discussion, debate, speech making, conversing with the people on conversational app, and then you will see that automatically you learn style and it will get reflected through your presentation. But I am sorry to say that some people not capable of forming sentences learn three things, unnecessarily. Unnecessarily. My dear friend, first do the fundamental learning. अपने सीखने वाली चीज़ों को सीखो. कभी मत भरोसा करो कि 90 दिनों में, 45 दिनों में, 3 महीना में एक बहुत बड़ा ये सिखा देगा, वो टीचर का टेक्निक बहुत अच्छा है, बहुत सारे वीडियो हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे, सब्जेक्ट को ऐसे कर दो, वर्ब को ये मेरा अपना तरीका. कुछ नहीं है. आपने जैसे स्कूलों में ग्रामर पढ़ा, ग्रामर पढ़िए, फंक्शनल ग्रामर के यूजेस पढ़िए, और कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए. फंडामेंटल सेंटेंस फॉर्मेशन, then at basic level translation, then achieve complete their written knowledge, then practice, do it at the same time, achieve perfection. मेरा ख्याल है मैंने एक लाइन की बात 150 लाइन में कही है. मुझे मालूम है कि मुझे जब एक्सपीरियंस होगा मैं ये वीडियो पक्का डिलीट कर दूंगा और मैं अच्छे वीडियोस के साथ आऊँगा. तो अभी इतना ही, और कभी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में ना आए, कभी भी अनोखे अजूबे तरीकों पर ना जाए. इंग्लिश सीखने का एकमात्र तरीका है
लिखित और मौखिक सीखो, इसके लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करो। आपने लिखित सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं है, सेंटेंस बनाने की ताकत नहीं है, आप प्रैक्टिस करने चले गए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, लिखित मौखिक दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्शन तक पहुंच जाइए। कभी भी ऐसे सलाहों को नज़रअंदाज कीजिए जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, जो कि मैंने इन वीडियोस में डिटेल से बता दिया है। और अंत में प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत ध्यान दीजिए। मेरी प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट नहीं है, मुझे सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मालूम है, पर मेरा वो बिल्कुल मैंने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में सीखा है, तो दैट विल नेवर बी द पार्ट ऑफ नेचर, इट विल नॉट कम आउट ऑटोमेटिकली। आई नो दैट इट इज़ एटीट्यूड, opportunity, but it will not come out. I am an Indian, my instinct is Indian. Lot of people think that I know few pronunciation, I will let other know that this is the way to pronounce. And what about the whole dictionary? At least the word we use. Some people keep low opinion because their pronunciation is not up to the level. Then you also will be put in the custody as being a renowned figure. Do you pronounce college language? Do you pronounce like that? Even the professor of zoology says zoology. The right pronunciation is zoology. When you advocate for one particular pronunciation, why don't you change yourself? Zoology, Xerox. I explained it earlier that 100% rectification in pronunciation is stupidity. It is not possible. I made extensive research of various pronunciation across the globe, and it is generated in some cases due to the accent. Try your best to come to the British level, and if possible, do it. Pronunciation is integral part. I mean to say your way of speaking will be very impressive, because it is all about creating impress. You know, when you pronounce the word, like see in Hindi schools, hello, roll number 1, present sir, and see a smart student of English medium school, present. Which one is impressive? ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम छोड़ दीजिए, कौन सा अच्छा लगता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट, डेफिनेटली सेकंड वन। तो बिना कुछ सोचे उसको अपना लीजिए। उसके बाद है कि आप समय समय पर जांचते रहिए, क्या मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन आया? कैसे जांचेंगे? मशीन? नो, ब्लड शुगर नहीं जांचना है। आपने सेंटेंस को पहले सोचना है, एक सिचुएशन को। ट्रांसलेशन और एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग चीज़। आप उस सिचुएशन को सोचिए कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा, मतलब टेस्ट के लिए, नॉट ऑल द वाइल। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी वीडियो कोई देखेगा बड़ा गलत इंप्रेशन लगाएगा कि पहले से ढंग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कैसे कहूँगा? तो मुझे काबिलियत होनी चाहिए इसकी। सी, आई एम क्वाइट फर्म इन माई ओपिनियन दैट पीपल whosoever will watch the video will have different opinion about me। तो ये बन गया। तो फिर मुझे अगर उसके बाद सोचना है कि कैसे उत्तर दूंगा, तो इन दैट केस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन माई सिचुएशन, दैट ओवर द ईयर वट एवर आई एक्सपीरियंस्ड, दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शेयर, एंड दैट इज़ वाई माई अप्रोच इज वेनमस। ये हो गया। तो आप जांचते रहिए कि क्या ऐसी स्थिति में मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बक पाऊंगा। जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में लिखिए कि प्लीज़ डिलीट दिस वीडियो अर्लीस्ट पॉसिबल, मैं डिलीट कर दूँ। मुझे हीरो नहीं बनना दुनिया में, मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट कह के ये वीडियो शुरू किया है। तो मान लीजिए मुझे कहना है, उसके रंग ढंग तो देखो, सोचता है जैसे लगता है कि दुनिया का बादशाह है, पर है तो कुछ भी नहीं। इसको कैसे कहेंगे? See the way he behaves, or see the way he behaves as if he is the boss in dominating position, a conqueror, an emperor, but in reality he is good for nothing। तो इसलिए मैंने किसी तरह से भी सिचुएशन को कह दिया। आप भी ऐसा अगर पहुंच जाते हैं इस लेवल पे, तब आपने अंग्रेजी सीख ली है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, जो हिंदी मीडियम के साथ जीवन भर लगा रहेगा वो मेरे साथ है, और वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। ही के साथ हैव, सी के साथ है, ही के साथ हैव, आई के साथ हैज, ऑन के जगह इन, प्रीपोजिशनल मिस्टेक, ऑक्सिलरी वर्ब मिस्टेक, it is bound to happen। Why? Because we are the person of low intellect from Hindi schools? No, because we have learnt it in the latter part,
And if we are not focusing on what actually we are saying, we are bound to commit the very simple mistake, which will create the whole course of talking and impression. People will have a different idea कि वो तो एन ऑन और एन तो उसको पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल चिंता ना करें, बढ़ते रहें, अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखें, कभी ना सोचें कि दूसरे क्या बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ पागलपन का करें, मतलब कि एक सनक है, एक धुन है, और आप उम्मीद करें कि टिल आई ब्रीद लास्ट I will attain perfection, and if I do that successfully, then life will be meaningful. Means in a sense that you have exhausted all your effort, energy and time in a constructive way, and I accept that this is not the only thing. इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, ज़िंदगी का हर पहलू, हर क्षेत्र है, उसमें मेहनत कीजिए, उसमें समय दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये अंग्रेजी ही दुनिया जीवन का एक लक्ष्य ना हो जाए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। Thank you for watching. If you have reached to the end of the video,